Hello, hi. Hello. Hi. Yes, good morning. Join first. Join first, join first. Next, give first question of today's. Okay. If tan theta alpha plus theta is equal to n tan alpha minus theta, so that n plus 1 sin 2 theta is equal to n minus 1 sin 2 alpha. Okay. So implies first write given that tan theta plus alpha is equal to n tan alpha minus theta implies tan alpha plus theta divided by tan alpha minus theta is equal to n. Okay, is equal to n. Then applying componendo and dividendo rule, right? Applying componendo and dividendo rule, अब कंपोनेंट में डिविडेंड रूल क्या बोलता है ए बाई बी इजिकल टू सी बाई डी इजिकल टू ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इजिकल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी डिनोमिनेटर को ए न्यूमरेटर में एक ऐड करोगे एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करोगे ओके सो इम्प्लाइज tan अल्फा प्लस थीटा प्लस tan अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय tan alpha plus theta minus tan alpha minus theta okay is equal to n by 1 है n plus 1 by n minus 1 okay implies tan alpha plus theta will लिख सकते sin alpha plus theta divided by cos alpha plus theta plus sin alpha minus theta by cos alpha minus theta divided by sin alpha plus theta by cos alpha plus theta minus sin alpha minus theta by cos alpha minus theta is equal to n plus 1 by n minus 1 okay अब ऊपर एलसीएम ले जाओ cos अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा यार साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस कॉस alpha plus theta into sin alpha minus theta divided by cos alpha plus theta into cos alpha minus theta okay is equal to is equal to n plus 1 by n minus 1 अब इस डिनोमिनेटर को काट देगा तो रहेगा क्या साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा into sin alpha minus theta is equal n plus 1 by n minus 1 okay
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ओके, अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय एन माइनस वन, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसल, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसल, okay. First you write this one, next I will write, okay. Right. Complete. Next. यहाँ पर लिखो implies, को पिन मार देता, हाँ देखो implies sin 2 alpha divided by sin 2 theta is equal to n plus 1 by n minus 1. अभी लिखो n minus 1 sin 2 alpha is equal to n plus 1 sin 2 theta. Proof. Okay. तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके. सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं फायदा होगा, ओके. तुम एक बच्चे ने लाइक कर दिया, तुम्हारी फायदा होने से तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुमको जान पाओगे यदि तुम सब्सक्राइब करोगे, ओके. लिखो सेकेंड क्वेश्चन राइट. इफ tan alpha is equal to m by m plus 1 and tan beta 1 by 2m plus 1 so that alpha plus beta is equal to pi by 4. लिखो इस क्वेश्चन को लिखो. given that tan alpha plus beta is equal to tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha into tan beta implies tan alpha plus beta को यही रखो. tan alpha का फॉर्म वैल्यू m by m plus 1 1 by 2m plus 1 1 minus m by m plus 1 into 1 by 2m plus 1. tan alpha plus beta is equal to m plus 1 whole into 2m plus 1 कितना होगा m whole into 2m plus 1 plus m plus 1 divided by m plus 1 whole into 2m plus 1 minus m divided by m plus 1 whole into 2m plus 1. इसको काट लो. implies tan alpha plus beta is equal to 2m square प्लस m 2m हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर प्लस m यर m 2m 3m माइनस m 2m प्लस 1. इसको काटो तो 1 हो जाएगा. tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1. अब तुम वो बताओ tan के टेबल में किस वैल्यू 1 होता है. tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री 45 डिग्री को पाई बाय 4 लिखते हैं. So therefore alpha plus beta is equal to pi by 4. Okay. Proof. लिखो.
Okay. Next, question number 3. If tan beta is equal to n sin alpha cos alpha n sin alpha cos alpha divided by 1 minus n sin square alpha 1 minus n sin square alpha, so that tan alpha minus beta equals to 1 minus n tan alpha, isn't it? Okay. Solution, right? Given that tan beta is equal to n sin alpha cos alpha divided by 1 minus n sin square alpha, equation number 1. We know tan alpha minus beta is equal to tan alpha minus tan beta by 1 plus tan alpha into tan beta. Okay, so implies tan alpha minus beta is equal to tan alpha का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो tan alpha is equal to sin alpha by cos alpha. tan beta का वैल्यू गिवन है n sin alpha cos alpha divided by 1 minus n sin square alpha, ये tan beta by 1 plus tan alpha क्या होता है sin alpha by cos alpha मल्टीप्लाइड बाय tan beta क्या होता है n sin alpha cos alpha 1 minus n sin square alpha. Okay. So implies tan alpha minus beta is equal to, अब तुम एलसीएम ले जाओ cos alpha 1 minus n sin square alpha का एलसीएम ले जाओ, हो जाएगा sin alpha होल इंटू 1 minus n sin square alpha minus n sin alpha cos square alpha divided by cos alpha 1 minus n sin square alpha plus n sin square alpha cos alpha divided by cos alpha 1 minus n sin square alpha. देन इसको तो खत्म कर देगा, तो रह जाएगा क्या? तो tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin alpha whole into 1 minus n sin square alpha minus n sin alpha cos square alpha divided by cos alpha whole into 1 minus n sin square alpha plus n sin square alpha cos alpha implies tan alpha minus beta. ऑफ कैसे करोगे? साइन अल्फा को कॉमन ले आओ, नीचे कॉस अल्फा को भी कॉमन ले आओ, कॉस अल्फा सॉरी tan अल्फा में साइन अल्फा को कॉमन ले आओ, कॉस अल्फा को भी कॉमन ले आओ, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा
कॉस कॉस अल्फा को ले लिया वहाँ प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा। कोई गड़बड़ है क्या? अच्छा यहाँ पर एन, ओके। तो इस साइंस ए माइन लिखो लिखो लिखो, मैं बताता हूँ, ओके। implies, right, implies tan alpha minus beta is equal to sin alpha by cos alpha into 1 minus n common ले आओ, sin square alpha plus cos square alpha divided by माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा खत्म हो जाएगा, वन तो नीचे वन रह गया। tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर रह जाएगा tan अल्फा हो जाएगा वन माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि ना साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा वन, वन इंटू माइनस एन वन माइनस एन, ओके। प्रूफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, if sin alpha is equal to 3/5 and cos beta is equal to 9/41, find the value of sin alpha minus beta and cos alpha plus beta। लिखो। solution, given that sin alpha is equal to 3/5, equation number 1, cos beta is equal to 9/41, equation number 2. So therefore cos alpha is equal to root over of 1 minus sin square alpha is equal to 1 minus sin square alpha 1 minus 3/5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर हो जाएगा 16/25, that means 4/5। therefore sin beta is equal to 1 minus cos square beta, 1 minus cos square beta, cos square beta, beta cos beta 9/41 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81, 41 का स्क्वायर कौन बता सकता है, बताओ। 41 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो 41 लिखोगे स्क्वायर, एक करोगे 4 स्क्वायर 16, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8, जीरो वन स्क्वायर 0 1, तो 8 1681, 1681 इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाई 1681 हो जाएगा 40/41। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयरफॉर साइन अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ओके। साइन अल्फा 3/5, cos beta 9/41 minus cos alpha 4/5 into sin beta 40/41, okay। 9 is 27/5 and 5 5 4 20 minus 160/20, okay। 27 minus 160 divided by 205, that means 10 minus 7 is 3 minus 133/205, लिखो लिखो। नेक्स्ट मैं अब निकालूंगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का।
ओके, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ना सब्सक्राइब करने से तुम्हारे फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। नेक्स्ट, जितने बच्चे अभी लाइव है सब सब्सक्राइब करना चाहिए। योर कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कितना है, कॉस अल्फा कितना होता है 4/5, कॉस बीटा कितना है, कॉस बीटा कितना है 9/41 माइनस साइन साइन अल्फा कितना है 3/5, साइन बीटा कितना है 40/41। ओके, 36/205 minus 120/205, 10 minus 6 is 4, 9 11 minus 6 is 8, 9 minus 84/205 is your answer. Then question number 5. If alpha and beta are angles, right? If alpha and beta are angles in first quadrant, such that in first quadrant such that tan alpha is equal to 1/7, tan alpha is equal to 1/7, sin beta is equal to 1/√10, sin beta is equal to 1/√10. Then find the value of sin alpha plus beta. Then find the value of sin alpha plus beta. निकालो निकालो। Given that tan alpha is equal to 1/7, sin beta is equal to 1/√10. अब निकालो इसको। हमको चाहिए साइन अल्फा कॉस बीटा। फास्ट निकालो कॉस बीटा कितना होता है। कॉस बीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 1 माइनस 1/10 हो जाएगा, √10 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1/10, दैट मीन्स √9/10 इक्वल टू 3/√10 साइन बीटा कॉस बीटा। ओके, देन साइन अल्फा, टैन अल्फा को लिख सकते हो लिखो सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सेक अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 1/49 स्क्वायर 49, तो 40 फिर √50/49, दैट मीन्स 5√2/7। cos alpha is equal to 1/sec alpha 1/5√2/7 और 7/5√2 लिखो। मैं पेज चेंज करूँगा, पेज कंप्लीट। मॉर्नी T3 के said hi. Yes, hi Moni. Good morning. Tell. Right, next.
So therefore sin alpha is equal to 1 minus cos square alpha. Okay, under root, okay, sin alpha is equal to 1 minus 7 by 5 root 2 का square. Sin alpha is equal to 1 minus इसका 49, 5 का 1 फिर 2 50. अच्छा, sin alpha is equal to 50 minus 49, 1 by 50, 1 by 5 root 2. Okay. So therefore sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. sin alpha 1 by 5 root 2 into cos beta कितना होता है 3 by root 10 प्लस cos alpha कितना होता है 7 by 5 root 2 sin beta कितना होता है 1 by root 10. Okay. Moni T3 के any doubt? Tell me. 5 root 20 plus 7 by 5 root 20, 10 by 5 root 20, 2 by root 20. Okay. रूट 20 को तुम किस प्रकार लिख सकते हो 2 root 5 2 to cancel 1 by root 5 और रूट 5 by 5 क्यों ना रेशनलाइज भी तुम कर सकते हो आंसर लिखो लिखो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 prove that cos A cos C minus A minus sin A sin C minus A minus sin C minus A sorry sin A is equal to cos C लिखो तुम लिखो 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 LHS लिखो cos A cos C minus A minus sin A sin C minus A cos A cos B minus sin A sin B cos A plus B तो cos A plus B कितना A plus C minus A plus A minus A cancel cos C is equal to RHS. Okay. लिखो कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर दूंगा 7 नंबर prove that tan A minus B by tan A minus B plus tan B by 1 minus tan A minus B into tan 1 minus tan A minus B into tan B is equal to tan A के समान है राइट LHS tan A minus B plus tan B divided by 1 minus tan
ए माइनस बी इंटू टेन बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन इंटू टेन बी प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन बी ओके इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी यहाँ पर हो जाएगा टेन बी प्लस टेन ए टेन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी लिखो वन प्लस टेन इंटू टेन बी वन प्लस टेन इंटू टेन बी कैंसल यहाँ पर हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी प्लस टेन बी प्लस टेन ए प्लस टेन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन स्क्वायर बी में माइनस टेन प्लस टेन बी कैंसल यहाँ पर इस कैंसिल हो जाएगा ओके कैन बी थोड़ा गड़बड़ नहीं है टेन ए माइनस टेन बी प्लस टेन बी प्लस टेन इन टेन स्क्वायर बी टेन इन टेन स्क्वायर बी यहाँ पर हो जाएगा टेन बी टेन इंटू टेन स्क्वायर बी ओके यहाँ पर टेन ए कॉमन ले आओ टेन ए कॉमन वन प्लस टेन स्क्वायर बी यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर बी ओके इसको ख़त्म कर देगा टेन ए बचेगा ओके इज इक्वल टू आर एच एस ओके देन क्वेश्चन नंबर 8 लिखो okay next sin a minus b prove that sin a minus b by sin into sin b by sin a into sin b plus sin b minus c plus sin b minus c into sin b into sin c to sin b into sin c plus sin c minus a by sin c into sin a by sin c into sin a is equal to 0 लिखो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड ओके साइन ए माइनस बी बाय साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी बाय साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए बाय साइन सी इंटू साइन ए ओके अब कुछ नहीं करना तुमको तुम केवल और केवल पुट द फॉर्मूला
गेट द आंसर। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्यों क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी प्लस साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी डिवाइडेड बाय साइन बी साइन सी प्लस साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन सी साइन ए इज इक्वल टू, अच्छा ए माइनस बी बाई सी कितना होगा, ए बाई सी माइनस बी बाई सी। ओके, तो साइन ए कॉस बी बाय साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी बाय साइन ए साइन बी प्लस साइन बी कॉस सी बाय साइन बी साइन सी माइनस कॉस बी साइन सी बाय साइन बी साइन सी प्लस साइन सी कॉस ए बाय साइन सी साइन ए माइनस कॉस सी साइन ए बाय साइन सी साइन ए। साइन ए कैंसल, साइन बी कैंसल, यहाँ पर साइन बी कैंसल, यहाँ पर साइन सी कैंसल, साइन ए कैंसल, यहाँ पर साइन सी कैंसल, रह जाएगा क्या, कॉस बी बाय साइन बी माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस सी बाय साइन सी माइनस कॉस बी बाय साइन बी प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस सी बाय साइन सी। तुम यहाँ पर भी काट सकते हो और काट के जीरो बना सकते हो और कॉट बी लिख सकते हो माइनस कॉट ए लिख सकते हो प्लस कॉट सी लिख सकते हो माइनस कॉट बी लिख सकते हो प्लस कॉट ए माइनस कॉट सी माइनस कॉट सी प्लस कॉट सी कैंसल प्लस कॉट ए कैंसल माइनस कॉट बी प्लस कॉट बी कैंसल इज इक्वल जीरो। ओके, प्रूफ्ड। Question number 9. Prove that sin A minus B by cos A cos B plus sin B minus C by cos B cos C plus sin C minus A sin C minus A by cos C into cos A is equal to 0. Homework for you. Okay, homework for you, and answer in comment box. Okay, question number 9 is homework for you. Okay, right. Complete. Question number 10. Prove that tan A plus tan B is equal to sin A plus B by cos A cos B. निकालो LH
LHS tan A plus tan B. ओके, tan A को तुम लिख सकते हो sin A बाय cos A प्लस sin B बाय cos B। अब एलसीएम लेकर ऐड कर दो, sin A cos B प्लस cos A sin B डिवाइडेड बाय cos A cos B। sin A cos B प्लस cos A sin B किसका फॉर्मूला है? sin A प्लस B का फॉर्मूला है बाय cos A cos B इज इक्वल RHS। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट tan A minus tan B equal sin A minus B by cos A cos B। Homework for you and answer in comment box। Okay, question number 12। लिखो। Okay, question number 12, prove that tan A plus B, right? Prove that by cot A minus B is equal to sin square A minus sin square B is equal to sin square A minus sin square B divided by cos square A minus sin square B, cos square A minus sin square B। Okay, right, LHS tan A plus B by cot A minus B is equal to tan A plus B by 1 by tan A minus B। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा tan A प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ tan A माइनस बी। tan A प्लस बी को तुम लिख सकते हो sin A प्लस बी बाय cos A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय sin A माइनस बी बाय cos A माइनस बी। sin A प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी cos A प्लस इंटू cos A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू RHS। प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, राइट फर्स्ट, राइट फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13,
if tan theta is equal to q sin alpha by p plus q cos alpha, q sin alpha by p plus q cos alpha, then so that tan alpha minus theta is equal to p sin alpha by q plus p cos alpha. q plus p cos alpha लिखो. given that tan थीटा का वैल्यू कितना होता है q sin अल्फा बाय p प्लस q cos अल्फा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. we know tan alpha minus theta is equal to tan alpha minus tan theta by 1 plus tan alpha into tan theta. Tan alpha so implies tan alpha minus theta is equal to sin alpha by cos alpha minus tan theta कितना लिख सकते हैं q sin alpha by p plus q cos alpha divided by 1 plus tan alpha sin alpha by cos alpha tan theta q sin alpha by p plus q cos alpha. Okay. tan alpha minus theta is equal to cos alpha into p plus q cos alpha को एलसीएम ले जाओ. लेने से तुम्हारा क्या हुआ sin alpha होल इंटू p plus q cos alpha minus q sin alpha cos alpha divided by cos alpha होल इंटू p plus q cos alpha plus q sin square alpha divided by cos alpha होल इंटू p plus q cos alpha. अब इसको ख़त्म कर देगा. tan alpha minus theta is equal to sin alpha होल इंटू p plus q cos alpha minus q sin alpha cos alpha होल इंटू p plus q cos alpha plus q sin square alpha. Okay. Implies tan alpha minus theta is equal to p sin alpha plus q sin alpha cos alpha minus q sin alpha cos alpha divided by p cos alpha plus q cos square alpha plus sin square alpha. यहाँ पर q के tan alpha minus theta is equal to यहाँ पर कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा p sin alpha. यहाँ पर p cos alpha तो कट जाएगा q plus q cos square alpha sin square alpha कितना होगा sin square alpha plus cos square alpha implies tan alpha minus theta is equal to p sin alpha by p cos alpha plus q. RHS not proved. Okay. क्योंकि ना हम LHS यूजिंग करके करें ना तो RHS कितना हुआ. ओके लिखो.
लिखो लिखो। ओके, then question number 14. Proof that प्रूफ दैट यदि लिख चुके हो वेट करो नहीं काट लो। इफ साइन थीटा प्लस अल्फा लिखो। इफ साइन थीटा प्लस अल्फा एम साइन थीटा माइनस एम साइन थीटा माइनस अल्फा then show that m plus 1 cot alpha is equal to m minus 1 cot alpha. First try yourself, because in this type of question already I have done. Using component or independent you can do. Okay, given that sin theta plus alpha is equal to m sin theta minus alpha is equal to sin theta plus alpha divided by sin theta minus alpha is equal to m by 1. Using componendo and dividendo rule, sin theta plus alpha plus sin theta minus alpha by sin theta plus alpha minus sin theta minus alpha is equal to m plus 1 by m minus 1. So implies sin theta cos alpha plus cos theta sin alpha plus sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha divided by sin theta cos alpha plus cos theta sin alpha minus sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha is equal to m plus 1 by m minus 1. Okay, यहाँ पर लिखो sin थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा sin अल्फा प्लस sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा sin अल्फा माइनस sin थीटा cos अल्फा प्लस cos थीटा sin अल्फा is equal to m plus 1 by m minus 1. cos थीटा sin अल्फा प्लस cos थीटा माइनस sin अल्फा, sin थीटा cos अल्फा यहाँ पर कट जाएगा। 2 sin थीटा cos अल्फा बाय 2 cos थीटा sin अल्फा m plus 1 by m minus 1. जो थोड़ा क्वेश्चन चेंज करो, ये कॉट अल्फा नहीं होगा, ये कॉट थीटा होगा। ओके,
2 कैंसल, साइन थीटा कॉस अल्फा बाय कॉस थीटा साइन अल्फा जो एम प्लस 1 बाय एम माइनस 1 साइन थीटा सॉरी cos theta sin alpha. Okay, sin theta by cos theta, tan theta cos alpha by sin alpha, cot alpha is equal to m plus 1 by m minus 1. Okay, m minus 1 cot alpha is equal to m plus 1. यदि tan theta इधर आएगा तो cot theta हो जाएगा. ओके, cot theta is equal प्रूफ. ओके, लिखो. लिखो लिखो. अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन कराऊंगा. ओके, आर यू रेडी टू सॉल्व एडवांस लेवल क्वेश्चन? लिखो. क्वेश्चन 15. An angle alpha is divided into two parts and angle alpha is divided into two parts such that the ratio of the tangent of the parts such that the ratio of the tangent of the parts is k. Okay, if x be the difference between the two parts, if x be the difference between the two parts, prove that sin x is equal to k minus 1 by k plus 1 sin alpha. Okay, solution. First you read the question, understand the question, after that I will tell. एक एंगल अल्फा है जो कि दो पार्ट में विभाजित करता है. ओके, सो द रेशियो ऑफ द टेंजेंट कितना है? के है. इफ डिफरेंस दो पार्ट के यदि डिफरेंस x है तो पूछा है प्रूव दैट साइन x इज इक्वल टू k माइनस 1 बाय k प्लस 1 साइन अल्फा. कैसे करोगे? अगले क्लास क्वेश्चन में ही डील करेंगे, बट अगले टाइप के ऊपर. ओके, अगले टाइप तुम्हारा होगा tan 69 प्लस tan 11 इज इक्वल साइन इतना. ओके, वैल्यू आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा. यहाँ पर वैल्यू विथ वेरिएबल, सॉरी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री विथ वेरिएबल गेम हो रहा है. अगले क्लास पे फ्राइडे को ट्रिग्नोमेट्री विथ कुछ वैल्यू में गेम करेंगे. सच एज एग्जाम्पल tan 70 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 कैसे प्रूव करेंगे वहाँ पर सीखेंगे. ओके, देन मंडे को आई थिंक क्लास तुम्हारा सस्पेंड रहेगा कि क्योंकि ना फेस्टिवल है 3 डेज का. देन वेडनेसडे को हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. ओके, एडवांस क्वेश्चन आज के क्लास पे कुछ कराऊंगा और नेक्स्ट क्लास पे भी कुछ कराऊंगा. ओके, लिखो.
given that an angle alpha is divided into two parts A and B such that फर्स्ट लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बोलूँगा. ओके, such that A plus B is equal to alpha and tan A by tan B is equal to K. Let x equals to A minus B. To prove sin x is equal to K minus 1 by K plus 1 sin alpha using tan A is equal to K tan B. Let tan B को ले जाओ T. So then tan A कितना होगा? Tan A is equal to KT. Okay. Okay. Now tan alpha is equal to tan A plus B. Implies tan alpha is equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. Implies tan A is equal to K plus 1 into T by 1 minus KT का square. Okay. And tan x is equal to tan x equals to A minus B, x equals to A minus B, so tan x to tan A minus B. So implies tan x is equal to tan A minus tan B by 1 plus tan A into tan B. Okay. Implies tan x is equal to K minus 1 whole into T by 1 plus KT का square. Okay. लिखो. Now sin x is equal to tan x by रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x. ये एक sin x का स्पेशल फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट जो फाइंड कर सकते हैं. ओके. Implies sin x is equal to K minus 1 whole into T by 1 plus tan square x to 1 plus KT का स्क्वायर. ओके. प्लस K minus 1 whole square whole into T का स्क्वायर 1 plus KT का स्क्वायर प्लस K minus 1 का होल स्क्वायर T का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 plus T का स्क्वायर होल इंटू 1 plus K का स्क्वायर T का स्क्वायर. So hence sin x is equal to K minus 1 whole into T by root over 1 plus T का स्क्वायर 1 plus K का स्क्वायर T का स्क्वायर. ओके. Similarly, sin alpha is equal to K plus 1 whole into T by root over of 1 plus T का स्क्वायर 1 plus K का स्क्वायर T का स्क्वायर. ओके. So therefore sin x by sin alpha
अब इसको डिवाइड करो, साइन एक्स बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू के माइनस वन बाय के प्लस वन, क्योंकि ना डिवाइड करने से टी टी खत्म हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर भी खत्म हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू के माइनस वन बाय के प्लस वन साइन अल्फा। प्रूफ लिखो, मैं बोल देता हूँ मैंने कैसे किया। लिखो, लिखो। लिख लिए? समझा देता हूँ, रुको। क्वेश्चन है, एक एंगल अल्फा है जो कि दो पार्ट में विभाजित करता है, एक के में एक वन में। ओके, यदि डिफरेंस दो पार्ट का डिफरेंस यदि एक्स है तो प्रूफ करो साइन एक्स इज इक्वल टू के माइनस वन बाय के प्लस वन साइन अल्फा। ओके, फर्स्ट लिखना पड़ेगा एंगल अल्फा जो भी दिया है उसको लिख लो, टेन ए बाय टेन बी इज इक्वल टू के। तुम टेन ए बाय टेन बी को फर्स्ट के मत मानो, देखो ए बाय बी को के ले जाओ, क्योंकि ना यहाँ पर द रेशियो ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पार्ट इज के, दो टेंजेंट इज के, तो टेन ए बाय टेन बी इज इक्वल के। ओके, एंड दोनों पार्ट का डिफरेंस के बी एक्स है, तो एक्स इक्वल ए माइनस बी, सो साइन एक्स इक्वल्स टू सॉरी एक्स ए माइनस बी। प्रूफ हम ये करेंगे यूजिंग टेन ए इज इक्वल के टेन बी, टेन ए इज इक्वल टू के टेन बी। यहाँ पर टेन बी को टी मान लो, तो टेन इज इक्वल के टी। ओके, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन ए प्लस बी यहाँ पर है, तो टेन अल्फा इज टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन इंटू टेन बी। पुट द फॉर्मूला, सॉरी पुट द वैल्यू। ओके, देन tan x is equal to here x is a minus b, tan x to tan a minus b. You have to put the formula. Okay, next यहाँ पर sin x का एक ये एक्सेप्शनल फॉर्मूला होता है, sin x को डायरेक्ट निकालने के लिए tan को। ओके, देन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में इसी टाइप के ऊपर और सॉरी इसी फॉर्मूला के ऊपर अगले टाइप करेंगे। उसके बाद 5 से 6 एडवांस क्वेश्चन है, उसके बाद उसके करेंगे। ओके, अगले क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ओके, मंडे को शायद हॉलीडे रहेगा क्योंकि ना तो हमारा एक पर्व है। ओके, जो दिखेंगे। ओके, अगले क्लास के ही मैं ख़त्म कर दूंगा सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करने से तुम्हारा व्यूज़ बढ़ेगा, तुम्हारा क्लास का चार्मिंग होगा, एंड सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारा ही फ़ायदा क्या होगा, तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड में दिख रहे हैं उसको को भी मैं बोल रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सब्सक्राइब करने से तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फ्राइडे को क्लास लूँगा, फ्राइडे को ही उस पार्ट में कंप्लीट कर दूँगा। मंडे को मैं बोलूँगा क्लास लूँगा या नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।